them in Haryanvi. Oh, हम सारे मने देखो थारा गणा गणा धन्यवाद और मेरी बात ध्यान से सुनियो मैडम की भी आड़ है. So on that note, would you tell us why the interest in languages? I think the interest in language, it kind of started even before I was born. My dad had this problem कि वो है ना शुरू में कहीं पर भी जाते थे जॉब के लिए, even though he has like double MA and an MPhil, तो वो जॉब के लिए जाते थे, उन्हें दिक्कत इस चीज़ की होती थी कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे कहीं पे. So as he did not talk in English, लोगों को मतलब कंपनीज को लगता था like you know maybe that's going to be a problem for them in the future. तो वहाँ से पापा को लगा कि my kids they should know English. तो हमने उन्हें मेरे को इंग्लिश सिखाई. इंग्लिश सीखने के बाद फिर जैसे जैसे आप किसी चीज़ को शुरू से करते हैं ना, आपका और उसमें क्यूरियोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है. So I started exploring different languages. Like you know, if I can talk in English, then I can talk in accents. So about different languages. English का तो ये था कि सिर्फ इंग्लिश आई. अब इंग्लिश में आगे क्या करें, क्योंकि लैंग्वेज आने के बाद उससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा. देन आई लाइक यू नो स्टार्टेड लिसनिंग टू लाइक ब्रिटिश पीपल, अमेरिकन पीपल. तब लगा ये लोग इतनी अलग अलग तरीके से क्यों बोलते हैं, ये अपने वर्ड्स खा जाते हैं, कुछ वर्ड्स को ये बोलते ही नहीं है. व्हाई इज इट लाइक दैट? They roll their R's. Yeah, they roll their R's. They don't say their T's. Why does it happen? So that was like the curiosity. तो वो धीरे धीरे जैसे क्यूरियोसिटी बनी तो उसके बारे में और सीखा. फिर उसके बाद ज़रा सा क्यूरियोसिटी आई कि लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए. यू नो ये लैंग्वेजेस साउंड मोर इंटरेस्टिंग. अगर एक्सेंट इतने इंटरेस्टिंग है, so languages they're gonna be even more interesting. So then I started focusing on French, then Japanese, and now Spanish. So yeah. Nice. So out of the 5 languages, 3 are you just said them? Yes, and Hindi and Haryanvi. Yeah. Nice, nice. So like you mentioned, the interest in accent was this was the reason. You are the wonder girl of India. You cleared your graduation at the age of 16. You're Yes. only 18 and you're in the second year of your master's. Yes, final semester. How? I did 2 classes in 1 year. I think you know अगर हम किसी भी mind को किसी भी तरीके से mold करते हैं, I think the credit goes to my parents. क्योंकि हम किसी भी mind को, एक young mind definitely उसको इस way में mold किया, तो मैं उस way में करती गई. The thing was कि मेरे को कभी ये नहीं बताया गया कि पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई करनी ज़रूरी है. The only thing was कि हाँ, you are here, you're a student, studying is your religion and this is your duty, this is what you're supposed to do. That's it. It's like a normal thing, normal daily to daily life. आपके daily basis पे जो भी चल रहा है, तो उस accordingly आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, and that is your job. So this is what I was supposed to do, and as I was supposed to do this. So what happened was like you know धीरे धीरे you know कि पहले ये काम कर लिया, फिर ये काम कर लिया, घर पे सिखाना शुरू कर दिया मम्मी पापा ने. उसके बाद फिर ये हुआ कि क्लासेस में जो कर रहे हैं वो तो घर पे भी ऑलरेडी कर लिया. सो वाई यू वेस्टिंग योर टाइम ओवर हियर, क्यों ना आगे चलें थोड़ा. तो स्कूल वाले से बातचीत करी कि यू नो वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टफ. मुझे लगता है कि इंग्लिश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है. क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश आती है तो यू अंडरस्टैंड स्टफ बेटर. सो एज यू अंडरस्टैंड स्टफ बेटर व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग स्टफ. सो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल. तो धीरे धीरे ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी थी, मेमोरी अच्छी थी. सो उस चीज़ के चक्कर में यू नो वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग स्टफ. सो 2 classes in 1 year. That's what I did. Okay. So when was the moment you knew that you could do this? I think there was no moment. ये question काफ़ी common है और ये काफ़ी सारे लोगों का होता है. There must be a moment. There was no moment at all. ये शुरू से चलता हुआ आ रहा था कि जानवी तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, ओके. जानवी तुम्हें क्लासेस करनी है, ओके. जानवी अब मुझे लगता है कि मेरे को एक्सेंट करना चाहिए, ओके. तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं था. अभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि मेरे को इसके बाद PhD करनी है या फिर आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर या फिर एक BBC न्यूज़ एंकर. मोमेंट नहीं होगा. आई थिंक इट्स जस्ट यू नो अ पार्ट ऑफ द लाइफ कि धीरे धीरे एक चीज़ एक प्रोसेस में चले जा रही है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ और वो उसी के हिसाब से काम करते जा रहे हैं. तो पहला आपने जो 2 एग्जाम साथ दिया था, that was which standard? I think it started from nursery itself. Oh wow! She started very young. Yeah. So obviously there are a lot of tips that you can share as a motivational speaker, but what is the first thing you would like to tell the students who are about to give their exams? Like the first thing, like a go-to mantra for every exam. Okay, first of all, exams को हमने इतना pressure मान लिया है ना exams का कि exams ही सब कुछ है, exams are everything. Yes, exams are stuff, but they're not everything. They're not like your whole life. हम इतना ज़्यादा stress मान लेते हैं उस चीज़ का. मुझे लगता है stress भी तभी आता है, pressure भी तभी आता है जब हमें confidence नहीं होता अपने ऊपर कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम exam में पास हो सकते हैं. Because definitely हमारी society में, even बाहर की countries में ये चीज़ है कि आपको अच्छी universities में जाना है, आपको आगे अच्छा करना है. So you have to gain good marks and that's
दैट्स अ फैक्ट. एंड मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग कहते भी हैं कि मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. डेफिनेटली नॉलेज के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड. तो मार्क्स अपने आप आपके पीछे आएंगे. सो द थिंग इज़ कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, वट एवर यू आर स्टार्टिंग इन वट एवर क्लास यू आर, आप उसमें जो भी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू डोंट क्रैम स्टफ, यू अंडरस्टैंड स्टफ. आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने आप क्वेश्चन के आंसर खुद देंगे. आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी ना. एग्जाम में प्रेशर होगा. क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड स्टफ. आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत ही नहीं है. व्हेन यू नो किस तरीके से सूरज पानी को लेता है, हाउ डज इट एवापोरेट एंड एवरीथिंग. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग stays clear. So make sure you focus on understanding the concept. Make sure you understand stuff instead of cramming on stuff. And there you go. Your exams are done. Exams, they are just the outcome. Exams सिर्फ ये चीज़ है. Exams क्या होते हैं कि आपने क्या क्या समझा अपने पूरे साल में. That is what exams are for. हमने क्या सोच लिया? Exams are like a test and everything. They are a test, but it's all about your understanding. So why don't you focus on the basic thing? And the basic thing is to understand the concept. That's it. To grasp the concept and not just mug up the thing. Yes. Right. So one of the questions that we had when we NCPCR website had asked students to give in their questions. We had around 4,000 people who came up with questions. Wow. So one of them was, what if I forget something while writing my paper? Like you know it, but you forget. When you forget it, so what I'm going to suggest is that drop that question right there. Why? Because your mind is so much distracted right now. दिमाग कहाँ चल रहा होता है? अगला question कैसे करेंगे? हम भूलते तभी हैं. That's when you forget. Is that when you're focusing on the next question more कि अगला question कैसे करेंगे? अगला question कैसे करेंगे? So the thing you're writing, you forget about that. So make sure when you're writing a question, when you're writing an answer, आप सिर्फ उस पे focus करें instead of focusing on the next question. इसलिए teacher भी काफ़ी बार कहते हैं कि आपको जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, स्टार्ट विद दैट. सो मेक श्योर यू नो कि आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ उसी साइड हो, एंड यू कैन गो विद दैट. देयर आर नो वरीज. So is there a need to follow a sequence while answering the papers? There is no sequence. मेरा जो मैं एग्ज़ाम के जो आंसर्स देती हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट से शुरू करती हूँ. Why? Because it gets me just going, कि हाँ फर्स्ट से शुरू किया, everything is going into sequence. Like I like to keep things in order. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, उन्हें लगता है ये वाला क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, हम इसे पहला कर लेते हैं. But what I can suggest is that if you're gonna start from the beginning, आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी भी रहेगी कि हाँ मैंने शुरू से सब कुछ किया है. सो स्टार्ट इट विद द बिगिनिंग. और वो कब होगा? When you understand the concept and when you have like good grasp on stuff, so you can just start it from anywhere. And I think the best part is to start it from the beginning. I don't know if it happened with you, but usually it used to happen with me, and I'm sure most of them will agree कि लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं ना, वो एक्सप्रेस में आंसर द मोस्ट. डेफिनेटली वी डू. ये मेरे साथ भी होता है. I'm gonna be honest, ये मेरे साथ भी होता है. लास्ट के 5 मिनट इट्स लाइक अब तो जो लिखना है ना, जो भी दिमाग में है वो सारा लिख दो, सब याद भी आ जाता है एकदम से. सो आई थिंक इट्स द रश ऑफ द टाइम. उस टाइम योर ब्लड इज रनिंग कि हाँ अब लिखना है. समथिंग लाइक यू वर्क बेटर अंडर प्रेशर. या समथिंग लाइक जब हमारे पास एक टाइम की लिमिट होती है ना, व्हेन वी हैव अ टाइम लिमिट, हम हमेशा काम बेहतर तरीके से करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, हमें उस काम करने का मज़ा ही नहीं आता. हमें जब तक उस काम को करने में मज़ा नहीं आता तो आखिरी के दिखते हैं यार ये काम तो करना पड़ेगा. तो जब ये हो जाता है ना ये काम तो करना पड़ेगा, तो लगता है हाँ ठीक है अब करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ अगर करना पड़ेगा से अलग ये हो कि हाँ ये काम करना है, तो आप सेम बैलेंस मेंटेन रखोगे शुरू से लेके एंड तक. सो मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एंजॉयिंग दैट. Yeah. Since you are from the arts faculty as such. Yeah. So आर्ट्स में ये माना जाता है कि लेंदी आंसर्स लिखने से मार्क्स मिलते हैं. क्या ये सच है? आई थिंक फिजिक्स में भी लेंदी, फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, पर जब मैं फिजिक्स पढ़ती थी उसमें भी लेंदी आंसर्स थे. ये बात सच नहीं है कि आपको लेंदी आंसर्स लिखने. आई थिंक आर्ट्स का अपना मज़ा है, नॉन मेडिकल का अपना मज़ा है. आर्ट्स में लेंदी आंसर्स का इसलिए मज़ा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना कहानियाँ पढ़ते हैं और फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड थियोरीज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ में लेंदी आंसर्स तो चलते हैं बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज कॉन्सेप्ट. फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. आपका ये फॉर्मूला है, देयर यू गो, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट्स इट. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी है यहाँ पर. कोई लोग किसी को लगता है लेंदी है, किसी को लगता है वो शॉर्ट है, बट अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है. वो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. सो पीपल नीड टू नो दैट. So a guy called Vijay has asked, he's from 9th. He says, how many hours should I study for my exams? Oh, it depends on you. Hi Vijay, first of all, and thank you so much for watching me. So how much hours you should study? I think it depends on you. आपको जितना लगता है कि हाँ मेरा इसमें satisfactory हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ आपको ये बताने से कि आप 3 घंटे पढ़िए, आप 4 घंटे पढ़िए, आप नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली, बिकॉज इट्स समथिंग यू हैव टू डू. आई कांट लाइक फोर्स यू कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. आई कैन डू दैट. व्हाट आई डेफिनेटली कैन से इज कि आप जब एक बुक उठाते हैं, यू सेट अ टारगेट. आप टारगेट बिठाइए
टाइम का मत देखिए टारगेट कि आज मेरे को ये वाली बुक खत्म करनी है या फिर आज मेरे को इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, और वो चैप्टर्स अब कितनी भी देर में हो, आप चाहे बीच में अब 1 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, आप चाहे 2 घंटे की सिटिंग दे रहे हैं, इट डजंट मैटर, जब तक आपका टारगेट खत्म हो जाए दैट्स व्हेन यू आर गोना गेट अप। और जब हम एक टारगेट बना लेते हैं ना, जैसे अभी हम टाइम लिमिट की बात कर रहे थे, तो आप उठते भी नहीं है, आपकी सिटिंग अपने आप बनी चली जाती है, चाहे अब वो काम 6 घंटे में पूरा हो, 7 घंटे में पूरा हो, एंड इट्स द रियलिटी, यू फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दैट सेट अ टारगेट, और फिर उसमें टाइम कितना भी लगे, जस्ट कंप्लीट दैट टारगेट एंड देन गेट अप। Nice. So Anurag from Kanpur says, I'm just too tense that I'm unable to sleep due to exam anxiety. Oh God, no, don't do that. Don't do that to yourself. I think unable to sleep, it's because first of all, hi Anurag, sorry. The unable to sleep and everything, it's the stress, it's the pressure you're thinking. मुझे लगता है कि नींद, आप एक तो सबसे पहले तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, when you're under pressure, okay? आपको प्रेशर है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, या फिर हमें इतना सब कुछ पढ़ना है, तो आप सो क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द क्वेश्चन, कि आपको पता है आपको 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, सो हाउ कैन यू स्लीप? सेकेंड ऑफ ऑल, इफ स्टिल यू कांट स्लीप, लेट्स टॉक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग, इफ स्टिल यू कांट स्लीप, सो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पे जरा सी बात करते हैं, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू नो एवरीथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस कब आएगा? यू स्टार्ट राइटिंग स्टफ बाय योरसेल्फ। हल्के सा थियोरेटिकल अगर बात करें, आप लिखना शुरू कीजिए अपने आप से, तो आपके अंदर वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, सेंस ऑफ ये आएगा कि हाँ मैंने खुद से लिखा, सो दिस इज हाउ आई एम गोना राइट इन एग्जाम्स। तो आप उस तरीके से करेंगे, आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आपको अपने ऊपर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ आई नो एवरीथिंग। और अगर आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई डोंट नो स्टफ, तो आप सोइए मत, तभी की तभी जागे और तभी की तभी पढ़ें, दैट्स इट। So people often talk about time management. Oh yeah. So how do you tackle this? मतलब you can give inputs from your own experience. Yes, definitely. I have to tackle a lot of things at like lot of different times. मुझे हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास उससे ज़्यादा नहीं होता, ना किसी के पास उससे कम होता। The thing is कि हम लोगों ने है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी बना दी हैं सोसाइटी में कि यार इतना सारा काम एक टाइम पे, हम इन चीज़ों को नाम ऐसी तरीके से दे देते हैं ना कि यार बहुत प्रेशर होता होगा, हम इन्हें हैंडल इस तरीके से करते हैं। दिस इज़ नॉट प्रेशर. First of all, stop, terming it as something negative. Stop terming it as like stress. Stop terming it as stress is a really, really heavy word. People who are dealing with stress, they have to deal with a lot of things. So, stop dealing with study like it's something stress. No, it's a part of your life. It's something you should do. तो हम सबसे पहले तो ये कि बहुत स्ट्रेस होगा, इतने सारे काम को हम इकट्ठा कैसे करेंगे, टाइम कैसे मैनेज होगा? टाइम अपने आप मैनेज होगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, आप टारगेट सेट करिए एक दिन का। हम टाइम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम काम के ऊपर ध्यान नहीं देते। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, कि काम इतना है, इतने वक्त में हो जाएगा, हम उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ध्यान क्या होना चाहिए हमारा कि ये काम है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, टाइम कितना भी लगे। क्योंकि बीच में है ना, जब हम खासकर व्हेन वी आर इन अ जॉइंट फैमिली, इवन वी आर नॉट, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। कोई आपको बुला रहा है, ओ इधर आ, ये वाला काम कर मेरे लिए, अच्छा फिर आपका खुद का मन कर गया, चलो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चला लेते हैं थोड़ी देर, दिस हैपेंस। तो टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। टाइम बहुत होता है हमारे पास, स्पेशली स्टूडेंट्स, टाइम बहुत होता है हमारे पास, हम चीज़ों को बस प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे जून चल रहा है, जून की वेकेशन चल रही है, बाद में कर लेंगे यार, हॉलीडे होमवर्क बाद में कर लेंगे, वी कीप पोस्टपोनिंग स्टफ। इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू इज दैट यू सेट अ टारगेट कि आज इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, इस सब्जेक्ट का इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं। हमने प्लान्स बनाने छोड़ दिए हैं। हम प्लान्स क्या बताते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे यहाँ पे करेंगे, फिर 8 बजे पढ़ने बैठेंगे। वो कभी फॉलो होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं फॉलो होता? बिकॉज देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, देयर ऑलवेज आर डिस्ट्रैक्शंस। बट when you set a target, you just build a time management for yourself. आपको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। You set a target, you get up, you're done with the work. That's it. So you mentioned Instagram and distractions. Yeah. So this year's परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी mentioned about आप read करते हो या reel देखते हो? Yes, I listen to that. Yeah. So a lot of us related to that, right? Yeah. Even now that we are past the exam age, you get distracted very easily. Yes. So what is your take on the same thing? Okay, so yes, everyone definitely, we Gen Z, we are definitely distracted by all of this stuff. Instagram पे reels बनाते हैं, likes इतने मिलेंगे, लोग appreciate करेंगे। I think अगर reels की बात करें तो reels हम देखते भी इसीलिए हैं और बनाते भी इसलिए हैं कि हमें लोगों का appreciation मिले। हम काफ़ी सारा हम सोचते ही रहते हैं, हम ये कपड़े पहनने होंगे नई रील के लिए, हम ये कपड़े पहनने के बाद नहीं यार उसने H&M पहना था, मेरे को ज़ारा पहनना पड़ेगा क्योंकि उसने ये वाले कपड़े पहने
पहने थे, so we are gonna do that stuff. तो हम ये रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, ये किस चीज़ के लिए कि हमें ताकि बाहर के लोगों का एप्रिसिएशन मिले, लोग हमारे ऊपर कमेंट करें, अरे तू इतनी सुंदर लग रही है, अरे तू इतना महंगा कपड़ा लेकर आई, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू. सोशल वैलिडेशन, यू नो, वी डोंट लुक फॉर हमारी खुद की वैलिडेशन, हमारी खुद के एक्सपीरियंसेस, हमारी खुद के एप्रिसिएशन की, यू नो, वी लुक इन द मिरर एंड देन वी लुक गुड. तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस कब होती हैं? when we are not focused, when you are not focused on one thing. अगर आपका focus Instagram पे है तो Instagram पे भी कुछ ऐसा करिए that you want 3 or 4 million followers, you know, 9,000 10,000 followers का किसे क्या करना है फिर. तो अगर आपका focus उस चीज़ पे है, so be the master of that field. नहीं तो आप अपना focus बदलिए. Your focus should be studying right now, your focus should be exams. जब आपका focus खुद उस चीज़ पे होगा ना, when you set a target for yourself, जब आपका focus उस चीज़ पे होगा, Instagram और ये सारी चीज़ें किसी और को ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका खुद ध्यान नहीं होगा उस चीज़ पे. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. ये डिस्ट्रैक्शंस खुद नहीं आती आपके साइड चल के. फोन खुद नहीं कहता ओए खोल मेरे को, देख मेरी साइड, इंस्टाग्राम पे रील्स बना. फोन आपको कभी खुद नहीं कहेगा. इट्स योर माइंड टेलिंग यू दैट, इट्स योर हार्ट टेलिंग यू दैट यू शुड बी डूइंग दिस. So it's all about your focus on what thing you're focusing right now. Everything is inside you. Literally everything is inside you. I sitting over here can't force you to do some stuff. You sitting, you know, in front of kids, you can't force to do them some stuff. Everything is inside you. तो आप अपना focus बदलिए. Set a target बनाते time what's gonna happen is target के बाद आपको खुद नहीं ध्यान होगा क्या Instagram, क्या Reels, क्या Facebook. You're never gonna focus on that. And that's exactly what our PM also said. Ki you have to, instead of offline and online, you have to get inner line with yourself. Yes. What do you want? And then you can use online. Yes. For your betterment. So, we have another question. How can we overcome from the pressure from our leaders during exam? Naman from class 11th asked this. What kind of leaders exactly? I think what he means is, if I am correct, yes, like people have expectations from you, your teachers, your parents. Yeah. That's what he means. Yes, I think expectations भी उसी इंसान से होती है जिसे लगता है ना कि हाँ ये इंसान कर सकता है. So you should be proud of yourself, Naman. You should be really really proud of yourself कि लोगों ने आपसे expectations करी कि आप इतना करेंगे. और फिर उन चीज़ों से डील करने के लिए what you can do है, सबसे पहले तो उस चीज़ का प्रेशर मत माने, उस चीज़ को पॉजिटिवली ले. हमारे साथ दिक्कत ये होती है, पेरेंट्स ने बोला इतने नंबर लेकर आने हैं, टीचर ने बोला इतने नंबर लेकर आने हैं, बिकॉज दे बिलीव इन यू. तो उस चीज़ को नेगेटिवली ना ले कि अरे इतना सब कुछ काम करना पड़ेगा, इतने सारे मार्क्स लाने पड़ेंगे, टीचर्स को लगता है मैं इतने नंबर ले आऊँगा. नहीं, उस चीज़ का पॉजिटिवली ले. वाओ, दे थिंक सो हाई ऑफ मी, they think so high of myself, उन्हें लगता है I can do this. So instead of taking it negatively, take it positively. हमारे साथ ये दिक्कत है, हम सारी चीज़ों को negatively लेते हैं आजकल, instead of taking them positively. अगले ने किसी भी वे में बोला हो, यू योर सेल्फ कैन टेक इट पॉजिटिवली. तो आप जितना एक चीज़ को पॉजिटिव लेंगे ना, उतने ही पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग उसकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, यू कैन थिंक वाओ, उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, सो आई कैन डेफिनेटली डू दिस. सो इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर थिंकिंग इन योर माइंड. योर थॉट्स आर यू. योर थॉट्स आर नॉट जस्ट योर ओपिनियंस एंड एवरीथिंग, दे आर you, they define your personality and they define you. So another question we have is that children feel confused during exams and get disoriented. So what to do to stay focused? Oh, confused with what exactly? Confused with like, you know, time management, confused with like कि दोस्तों के साथ इतना time spend कैसे करेंगे, confused with कि इस subject की तैयारी कब करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले इस subject की तैयारी करनी है. Don't get confused over all this stuff. I think all of this stuff, they only come in your mind, you know, when you are not confident enough कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या फिर yes this is easy. सबसे पहले तो आप चीज़ों को easy लेना शुरू कीजिए. बार बार अपने आप को ये मत बोलिए this is so confusing, this is so confusing. No, don't do that. You know, just keep reminding yourself is that this is easy and you can do this. It's all about, you know, your mind, what kind of things you're thinking. So instead of saying, you know, this is just so confusing, everything is all over the place. Nothing is all over the place. All you have to do is you have to get up in the morning. You have to tell yourself is that this is what you're supposed to do today and this is what you're gonna end with today. When you go to bed, you know, you're done with like 5 topics a day. There is a satisfaction. Nothing is confusing. Then you wake up the next morning and after that you still have a satisfaction कि कल वाला काम हो गया. Now it's time to focus on some other things. So today we are gonna cover up these topics. No confusions. Everything is straight. All you gotta do is wake up with satisfaction, do your stuff. There you go. Done. You said get up in the morning. So yeah. Is it necessary to have a routine, or some people have some yes. like sleep cycle, or some people prefer studying in the morning? Some people prefer studying in the night. Yeah. I think it depends on people, you know, it depends on people's perspective. But अगर generally मैं अपना personal opinion दूँ, so it's always nice to wake up early in the morning. I think the vibes होती है ना, वो उसी time होती है. हरियाणा में mostly ये चीज़ होती है, you know, पापा जब धूप निकल जाती है तो पापा हरियाणा में बोलते हैं
सूरज लिकड़ लिया या कोई टाइम है तेरे उठने का. So after sunlight it's like especially in villages, countryside Haryana, so getting up late, it's not like I'm saying it's a bad thing or anything, but I think getting up early has its own positive things, has its own pros, and has its own advantages. When you get up, there is a sense of like, wow, what a weather. आपको चिड़ियों की वो कहते हैं ना, वो मूवी के टाइप पे अगर दे चिड़ियों की आपको आवाज़ आ रही होती है, you look at the nature, everything's just like so calm, so peaceful at that time. तो आपको खुद में एक ये सेंस होगा like, wow, what a morning, what a beautiful morning. And starting your morning like that, your whole day is gonna be good. हालांकि आप अगर 10-11 बजे भी उठते हैं तब भी आपका दिन अच्छा जाएगा definitely, but उस टाइम एक अलग happiness होती है. So I think you should experience that. बाकी experiences पे भी depend करता है. I have that kind of experience. Maybe you can experience that too. It's gonna be great. Especially in the countryside, I think most of their jobs are done by 12. Oh yes, they are done by their day's work. So I think that can happen if people get into that routine with studies also, right? Yes, that can. Countryside में क्या होता है? People, after like 12, we are like, हाँ ठीक है, अब घर पे सोने का time आ चुका है. Now we are gonna get out in the evening and everything. So I think we can do the same. We can do the same, while we are studying. So while we are studying, we can just get up early in the morning and then we can just go on with our day. It's gonna be great. So another question we have is, for parents, if children are in stress and do not tell parents or anyone else, what are the signs to identify stress in children? Roshni from class 9th asks us. Okay, so first of all, Roshni, I'm so sorry if you're going through something like this. And Roshni, I think stress is a really, really heavy word. अगर आप exams का stress लेंगे, so there are going to be a lot of things in your life जो कि काफ़ी सारी difficult situations होंगी. So those are also going to be really extremely stressful for you. So first of all, stop dealing it with like stress. Second of all, I think जब आप किसी से बात करनी शुरू करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, parents, they are the best people to talk about this. हाँ, शुरू में embarrassment होती है, I definitely understand, because I'm also a teenager. I definitely understand opening up about some things. It can, get a little overwhelming at times कि किस तरीके से हम बात करें. But I think the thing is कि हमें कोई मिलता नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए. That's why वो stress जो है वो और बढ़ता जाता है. So your mom, your dad, they are gonna be the best people to talk about this. शुरू में आपको लगेगा कि यार मम्मी पापा से कौन ऐसी बात करता है, मम्मी पापा के सामने थोड़ी बोलेंगे एग्जाम का इतना सारा प्रेशर है. But मम्मी पापा ही एंड ऑफ द डे दे आर द ओनली वन दैट आर गोना हेल्प यू. वो आपको पॉजिटिविटी से भरेंगे. शुरू में बोलेंगे हाँ पढ़ी नहीं ना तू इसलिए हुआ. सो वो शुरू में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे. शायद से आपके साथ ना हो बट मेरे साथ डेफिनेटली होगा. अगर मैं अपने पापा के पास जाऊँगी, यार पापा टेंशन हो रही है एग्जाम की, हाँ पढ़ी नहीं बेटी क्या कर सका है. सो डेफिनेटली ऐसा होगा. बट वो उसके बाद फिर आपको बताएंगे भी, इट्स नॉट समथिंग टू टेक स्ट्रेस अबाउट. वो आपको बताएंगे भी. शुरू में आपको ओवरवेलमिंग लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, ये जानवी ने क्या बोल दिया. बट आप ज़रा सा बोलेंगे ना कि मैं थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करूँ, हल्का सा. कभी कभी मम्मी पापा के साथ फॉर्मल होते हैं ना तो तब भी अजीब लगता है कि यार इतने फॉर्मली बात करनी पड़ेगी. बट स्टिल इफ़ यू नीड टू गेट द थिंग आउट, दे आर गोना हेल्प यू. दे आर डेफिनेटली गोना हेल्प यू. आप फ्रेंड्स के आगे बोलेंगे, फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा रफा दफा करेंगे. देर आर डेफिनेटली गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड्स हु आर गोना हेल्प यू इन एवरीथिंग. बट स्टिल आप किसी के भी आगे बोलेंगे वो उसको रफा दफा करने की कोशिश करेंगे. योर पेरेंट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पीपल एवर. सो शेयर दोज थिंग्स विद देम. दे कैन लिसन टू यू. दे आर गोना लिसन टू यू. व्हेन दे आर गोना सी लाइक माय चाइल्ड इज अंडर प्रेशर, दे आर गोना लिसन टू यू. एंड दैट्स व्हाट वी नीड. कोई हमारी बातों को सुने. देयर यू गो, डन. Parents often know much more and better than us. Definitely. So how to overcome lack of motivation? Because sometimes you don't feel motivated enough to do these things, even if you know this is the right thing to do. Yes, this is the right thing to do. मैंने बोला ना वो शुरू में आपके लिए overwhelming हो जाता है. तो वो जो lack of motivation होता है ना, वो पता है कहाँ से आता है. We always think like कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. तो इसलिए मैंने parents का example दिया. हमारे अंदर अभी हम कितना भी बोलें we are a non-judgmental society, we are a non-judgmental society. दूसरे लोग ना जज करें, हम खुद को खुद ही जज करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा. भले ही अगला इंसान कुछ ना सोच रहा हो, but still हमें ऐसा लगता है कि अगला हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा. So instead of thinking that, think about yourself right now. Like, what do you need? Instead of focusing on other people, instead of focusing on other people's justification about everything, every little thing you're doing, focus on yourself. What do you need? वहाँ से motivation अपने आप मिलेगा. And मैं फिर से law of attraction की बात यहाँ पे उठाऊंगी क्योंकि हमने positive चीज़ों की साइड देखना बंद कर दिया है. The more positive you're gonna think, the more positive things you're gonna attract. So always keep reminding yourself you're good, you can do this. It's easy, it's extremely easy, and you definitely can do that. आपको क्या लगता है? Just be cool, be chill. It's nothing to stress about. Chill because you're still a teenager. It's about time you just enjoy your life, and that's what you should be doing. Nice. So Sumit from Bangalore asks,
how important is test writing or taking strategy? How to score good marks? Does writing or attending the exams in a certain manner help in achieving better marks? It definitely does. I'm sorry, what was his name? Sumit. Hi Sumit, it definitely does matter आप किस तरीके से अपना आंसर दे रहे हैं. It definitely matters कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि आंसर्स का एक राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि शुरू में आपसे जो जिस बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यू नो व्हाटएवर द टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोना इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक. आपको आंसर्स इस तरीके से लिखना है कि अगले इंसान को कुछ नहीं पता उस टॉपिक के बारे में और आपको उसे पूरा समझाना है. यू नो कि जो भी एग्जामिनर है डेफिनेटली उसे पता होगा, येस, बट आपको इस वे में लिखना है कि द एग्जामिनर ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट स्टफ, बट यू गोना मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट दैट स्टफ. यू नो द वे यू रीड a chapter and they make every single point clear, that's what you gotta do. तो आपको शुरू में जो भी टॉपिक है, whatever the question is, first you have to make sure कि अगले को वो समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है. आपको क्वेश्चन नहीं समझना, अगले को भी समझ आना चाहिए कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज द आंसर. इस तरीके से आप सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो उसका सब्जेक्ट मैटर है फिर उसके बारे में लिखेंगे. सो येस, यू शुड डेफिनेटली फॉलो अ स्ट्रैटेजी व्हाइल राइटिंग एन आंसर. इट गिव्स यू एक्स्ट्रा क्रेडिट्स ऑलवेज. So, do these answers need to be in point form or in paragraph form? What do you think? I think point forms is even better. Point form हमेशा इसलिए better होता है क्योंकि point forms में है ना हमें अलग अलग ये मिल जाता है कि जब हम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं तो एक अलग से स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ हमारा पहला स्ट्रक्चर ये है, हम पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर इसका सब कैटेगरी ये है, फिर उसका सब कैटेगरी ये है. तो ताकि है ना पैराग्राफ में लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है पढ़ना कि इतना कौन पढ़ेगा यार, बीच बीच में कौन देखेगा. नो वन रीड्स दैट. हम खुद से इस चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कितना पैराग्राफ पढ़ सकते हैं. नो, वी कांट रीड पैराग्राफ्स. हम पॉइंट्स में देखते हैं ना, मेन पॉइंट्स के ऊपर जब हम नजर मारते हैं तो हमें टॉपिक के बारे में समझ में आना शुरू हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट पॉइंट्स. यू नो, स्टडी थियोरेटिकली यस, पढ़ते टाइम आप पैराग्राफ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट्स में भी पढ़ना पड़ेगा. लिखते टाइम फोकस ऑन राइटिंग पॉइंट्स बेटर. So Brahma from Varanasi asks, how to score good marks in a language paper? Language paper. First of all, आपको language के जो पेपर होता है ना, हम इसे as a subject मानते हैं. Language is not a subject, guys. Language is a language. Treat it like a language. अब आपके आगे हिंदी का कोई टेस्ट लिख दे, अगर वहाँ पे लिखे राम नहा डैश है, तो आप obviously वहाँ पे रहा लिखोगे because you're familiar with that language. तो बाकी जो if you have like a German exam, if you're like a French exam, so treat it like a language. It's not a subject anymore. It's a language, and that is the problem with English. When we are studying English, we treat it like a subject. Oh my god, it's so difficult. No, it's not. The more familiar you're going to become with the language, the more discreetly you can answer a question. So when you're writing answers, write it like you're a native. आप जो language के answers दे रहे हैं आप उसके native हैं. If you're giving like a German exam, so think like you're a German, you're a native German speaker, then start giving your answers. So never treat it like a subject, treat it like a language. There you go, done with your language paper. That's a very good tip. So how to deal with peer pressure during preparation and also after result is declared? Why do you care about your peers, of course, Kritika from Chandigarh wants Hi Kritika, definitely. Please do not focus about your peers. Worry about your parents, क्योंकि क्या कहते हैं marks आने के बाद अगर कम marks आए वो पीटेंगे आपको. So worry about your parents. Your peers, they're just they're just your friends. They're, even if they are not your friends. First of all, अगर आपके friends आपको इस चीज़ का pressure दे रहे हैं तेरे marks अच्छे आने चाहिए, so they're not your friends. Believe me. अगर आपको अपने friends की side से भी pressure लेना पड़ रहा है, so they're not the kind of friends you should be staying with. और उसके अलावा आई थिंक जो पीयर प्रेशर होता है आपको खुद से लेना देना है. खुद का इतना स्ट्रेस है यार कि खुद के एग्जाम्स करने हैं, आप दूसरों का क्या स्ट्रेस लेंगे. सो ऑलवेज फोकस ऑन यू, लाइक दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. नेवर लाइक फोकस ऑन लाइक कि हाँ उसके मार्क्स अच्छे आ गए तो क्या होगा, उसके ज़्यादा मेरे से मार्क्स आ गए तो क्या होगा. नो, दैट इज द आउटकम. राइट नाउ व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन योर एग्जाम्स, व्हाट यू शुड बी स्टडिंग, योर कॉन्सेप्ट, योर टारगेट, योर टाइम टेबल, दैट इज व्हाट शुड बी फोकसिंग राइट नाउ. तो आप एक मोमेंट पे एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, नॉट ऑन द आउटकम. आउटकम तो बाद की बात है ना, पीयर प्रेशर तो बाद की बात है कि हाँ उसके हिसाब से मेरे इतने अच्छे मार्क्स चाहिए, वो मुझे ये बोलेगी या फिर वो मुझे ये बोलेगा. दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टॉक्स. अभी के लिए यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स, वो अपने आप सब कुछ हैंडल होता जाएगा. व्हेन यू अचीव गुड मार्क्स, एवरीथिंग्स गोना बी ग्रेट. So this question brings me to the question that validation seems to be a thing with Gen Z especially, yes. right? Like whether it's social validation or whether it's what will my peers think. It's a thing. It's so bad right now. Like everyone, even like 9-year-old kids who should be like watching cartoons right now, they are making reels. Like why are you doing all of that stuff? You gotta enjoy your childhood. हाँ, इसीलिए भी होता है क्योंकि हम इस ऐसे environment में बड़े हो रहे हैं जहाँ पे हमारे लिए है ना सब कुछ, everything goes with validation, everything goes with other people's appreciation. हर चीज़ अगर आपको दूसरों ने appreciate किया, that's life. That is not life. हमने इस चीज़ का मतलब ही बदल दिया है. दूसरों की validation, हम लोग पढ़ाई में validation लेते हैं, हम लोग सारी अलग अलग चीज़ों
चीज़ों में वैलिडेशन लेते हैं, और पढ़ाई में भी वैलिडेशन. व्हाई डू वी डू दैट? यू नो, वी आर टीनेजर्स, वी आर सपोज टू बी एंजॉइंग लाइफ. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. वी आर टीनेजर्स. आई एम 18, I still watch cartoons. I love doing that with my sister. I know some 30-year-olds who watch cartoons. You know, so we are supposed to be enjoying life. हमने इसका है ना definitions change कर दिया है कि अरे तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अरे तेरे 2 लाख फॉलोवर्स हैं. It's a good thing. If you have that, it's a good thing. आपको उसमें इंटरेस्ट है, you keep doing that. But इस चीज़ का प्रेशर मत मानिए. You know, it's something to enjoy. It's not something to be taken like this is your whole life. No, it's a part of your life, but it's not your whole life. तो दूसरों की validation is a part of your life. जब कोई आपको appreciate करता है, हमें अच्छा लगता है. जब कोई आपको बुरा बोलता है, तो हमें बुरा लगता है. हमने किसी और को ये चीज़ दे क्यों रखी है? किसी और के हाथ में हमने अपनी लाइफ की रेंज ही क्यों दे रखी है? इज दैट अगर वो अप्रिशिएट करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, अगर वो बुरा बोलेंगे तो हमें बुरा लगेगा. हाउ अबाउट यू डू इट योरसेल्फ? यू गोटा हैंडल योर ओन थॉट्स, यू गोटा हैंडल योर ओन माइंड, यू गोटा हैंडल योर ओन हार्ट. इट नेवर गोज अकॉर्डिंग टू अदर पीपल. यू नो, you don't have control over your own mind, you don't have control over yourself. Why do you let anyone else handle it? It's you who should be doing that. It's you who should be looking in the mirror and going like, yes, perfect exams, perfect me, done. You're only answerable to yourself. So what type of exercise students need to do during exam time? Kopal from Delhi wants to know. Okay, Kopal. Hi there. What type of exercises you should be doing? I think, you know, you can just keep a little bit of meditation. हालांकि मैं जब पापा के सामने meditation की बात करती हूँ तो पापा एक बात करते हैं, जिस काम को आपको करने में मज़ा आता हो वो खुद में एक meditation है. तो अगर आपको पढ़ाई करने में मज़ा आता हो, काफ़ी लोगों को नहीं आता, you know, let's be honest. तो अगर आपको पढ़ाई करने में मज़ा आता हो, so that's your meditation. उसके अलावा, you know, to just keep a peaceful mind. आप ज़रा सी meditation कर सकते हैं. Guided meditation YouTube पे काफ़ी सारी होती है, like a 10-minute guided meditation. Just feel everything, feel like the air you're feeling, feel कि अगर आपने fan on कर रखा है तो feel the air, you know, एक body part, feel that, you know when you're breathing, feel that. हमारी दिक्कत क्या होती है ना, हमारा mind इतनी सारी जगह होता है, हम बैठे हुए भी ना 70 चीज़ें सोच रहे होते हैं एक टाइम पे, because this is our mind. एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अगर हम उस चीज़ पे कंट्रोल कर लेना कि हमारी थॉट्स में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है, और उस फोकस को हम पॉजिटिव ले लें, एवरीथिंग्स गोना बी ग्रेट. सो मेक श्योर आप ज़रा सा मेडिटेशन करें ताकि यू जस्ट गेट अ फीलिंग कि हाँ, दिस इज़ मी, यू नो, एवरीथिंग. बी ग्रेटफुल फॉर स्टफ. दैट्स अनदर एक्सरसाइज. यू नो, व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इवन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ग्रेट थिंग्स. So many people want to give exams and they might not be able to reach the position that you are in. Yes. So you spoke about meditation, right? Often it happens, personal experience also, and I'm sure many people can relate. Especially when you sit to meditate, you cannot seem to forget everything that you have forgotten. Yes. Comes back to you. Yes. How do you Okay, so क्योंकि हमें ना बार बार जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, भूल जाए इस चीज़ के बारे में, भूल जाए, वो चीज़ बार बार आती है क्योंकि हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. मैंने बोला है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसकी जो थॉट्स हैं, अब उसमें एक चीज़ पे फोकस कर लीजिए, उस चीज़ को है ना, दूसरी चीज़ों को आने दीजिए. जिस चीज़ को आपको भूलना है उन्हें भी आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. पर आपकी डोमिनेंट थॉट क्या है, उस चीज़ के ऊपर मैटर कीजिए, उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि आपकी डोमिनेंट जो थॉट होगी ना, आप सिर्फ उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, बाकी आप सब कुछ भूल जाएंगे. मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब अगर एक ज़रा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर ले, व्हेन आई सिट टू मेडिटेट, तो मेरे दिमाग से जब चीज़ें नहीं जाती, सो व्हाट आई डू इज़ आई मेक अ बबल, लाइक अ रियली इमेजिनेटिव बबल. उसमें जो भी चीज़ें मुझे भुलानी होती है ना, आई जस्ट फोकस ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लाइक अच्छा मम्मा की डांट जाओ, पापा की डांट, इसके बबल के अंदर जाओ, टीचर ने ये कहा ये जाओ, आज उसके साथ लड़ाई हुई, नो, आई मेक अ बबल एंड देन you know, I push it too far away like in the sky that it becomes a star. फिर वो स्टार बन के भी आगे परेशान करता है कि मैं तो अभी भी यहीं हूँ. So what happens is, you know, you just dig it in the soil somewhere in your imaginary form. It's gonna recycle, वो पता नहीं फिर कहाँ होगा, and you just keep focusing. आपका subconscious जो mind है ना, उसका focus बनाइए. आपकी dominant thought जो है वो positive होनी चाहिए, negative thought अपने आप कम होती जाएंगी. That's it. You can probably take help from some music. Yes, guided meditation. Guided meditation, they literally help you a lot. Thanks, that's a nice thing to know. So a common question on our website was, my handwriting speed is very slow and because of that I'm not able to complete my paper. I can relate with you. ऐसा इसलिए क्योंकि सारे बच्चे बड़े बड़े होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, आगे लुके एकदम, दीदी क्या लिख रहे हो, दीदी बता दो ना. But yeah, जो राइटिंग की जो आपकी स्पीड स्लो है, आई थिंक
राइटिंग की स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। तो एग्ज़ाम से लाइक 3 और 4 वीक्स पहले आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए, टॉपिक्स को लिखना शुरू कीजिए, तो आप फेमिलियर हो जाएंगे उन सभी वर्ड से। हमारी स्पीड स्लो इसलिए भी होती है क्योंकि हम फेमिलियर ही नहीं होते लिखने से। हम पूरा साल पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, लिखते तो हम हैं ही नहीं, यू नो। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फेमिलियर विद राइटिंग स्टफ, यू कैन, यू नो, इंक्रीज योर स्पीड। सो बिफोर लाइक 3 और 4 वीक्स ऑफ एग्जाम, स्टार्ट राइटिंग स्टफ, अपने आप से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्टफ। आप फेमिलियर हो जाएंगे उस सब चीज़ों से, आप एग्जाम्स में अपने आप लिखते जाएंगे। I think usually people also experience their handwriting is very different when they are writing in class or taking notes. But during exam, how much ever you try to focus, because of the speed, the handwriting is gone for a toss. It happens the same. You know, शुरू में writing इतनी अच्छी जानवी इस exam में अच्छा लिखना है, end तक जाते you, it's like the MBBS doctor you're writing. It's like somebody else is writing. Yeah, somebody else is writing. Like, is this your handwriting? It's so terrible. No, but I think इसका भी वही same जो मैंने last answer दिया। आप जितना ज़्यादा familiar होंगे चीज़ों को लेकर कि हाँ मैंने इस topic पे लिखा हुआ है, तो आप उसी way में आप उसे लिख पाएंगे because you're familiar with that stuff. So your handwriting is gonna be great. We have a new question. How do I cope up with my stress eating during exams? Aditya. Eating? Aditya is asking. It's a male asking from Bhajanpura, Delhi. Okay. Hi Aditya. Eating, really? I eat a lot. Like I'm a really big Stress foodie. eating? I eat generally, yes. Stress में तो it's like I can't eat anymore. मतलब खुद में ये हो जाता है कि यार stress है, ऊपर से तू खा रही है, you know. So it's kind of like the embarrassment, but I think stress eating, Aditya, you know, let me tell you about this stuff कि सबसे पहले तो stress, it's nothing. Stress is nothing. आप इस चीज़ को ये word देना शुरू कीजिए। Eating तो enjoy eating ना, eating is a good thing. हम इस चीज़ को negatively क्यों ले रहे हैं? अच्छी बात। You know, eating is a good thing. The more you're gonna eat, the more healthy you're gonna become, and that's a good thing. But yeah, eat healthy things first of all. Stress eating भी करनी है, उसमें भी eat healthy things, eat greens and everything. It's gonna be great. So सबसे पहले तो आप चीज़ों को जो है ना पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए कि हम खा रहे हैं, खाना अच्छी चीज़ होती है, आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और भी अच्छी चीज़ होती है, आप ज़्यादा खा रहे हैं इवन बेटर, यू शुड ईट मोर। तो माई डैड कीप्स टेलिंग मी ज़्यादा खाया कर, क्या बन चुकी है, ज़्यादा खा। सो ईटिंग इज़ अ गुड थिंग। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली। आप उसको पॉजिटिवली लेंगे, स्ट्रेस अपने आप दूर होता जाएगा। So you think people should also concentrate on certain type of exercises that can help them in studying? Physical exercises. Oh, physical exercises. I think हमारी जो body है ना, physical exercises, पढ़ाई के लिए physical exercises it doesn't help, but yeah, your body it definitely needs some sort of, you know, physical activity in a day. You can do anything. You can play badminton, you can play football, volleyball, anything you want, but don't go on a pool table and then start hitting the balls ना, वो चीज़ नहीं चाहिए। But yeah, in physical exercises I can definitely suggest you, क्योंकि हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, so हमारी body it becomes exhausted, it's so knackered at a point, you know, it just gives up. So at that time get up, walk around. सिर्फ टहलना नहीं है इधर से उधर 5-10 मिनट ऐसे उस पर चले गए। नो, गिव yourself 30 to 40 minutes, play something, play with the kids in your street, you know, play with your siblings, play with your cousins, give your body time. Your body is going to be like, yeah, now I can have a good sleep. So yeah, that's important. That's definitely important. Do you play something? When I get time, yes. Yeah, but I do play for an hour with my cousins. So what do you like playing with? I actually play with the street kids, जो आसपास के neighbors के बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, and they're like, जानवी आजा खेलेंगे. So there are a lot of, you know, these local games, stupid kind of stuff. We play anything, literally. We keep running here and there, all in the society. And society, you know, the strict society parents, they come, चुप हो जाओ ना तुम लोग, कुछ नहीं करने देते हो, जानवी तू तो बड़ी हो चुकी है. So I do play. I run around a lot, but nowadays I'm playing badminton because Papa says कि कुछ तो खेल लिया कर, you know, instead of doing your stupid stuff just running on the street with the kids, just play something. So yeah, I do play badminton. Yeah, one has to also be careful not to get hurt just around the exams. Yes. Because I'm a clumsy person. I keep falling here and there so much. And when it's exam time, like I broke my hand right now. Don't do that. So that brings me to another question. You feel very sleepy whenever you study for quite a long time. Yeah. So what would you do? You feel sleepy because you don't like enjoying that stuff. अब आपको कोई बोले कि वीडियो गेम्स खेलना और आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, आपको नींद नहीं आएगी. So it's a really common thing, it's a really basic thing जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि whatever you are studying ना, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए. Just delve into that thing. हाँ, इंटरेस्ट ऐसे नहीं बनेगा कि अपने आप तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, आपको इंटरेस्ट एक चीज़ में बनाना पड़ेगा. आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा. शुरू में ज़रा सा टाइम लगेगा, बट देन dwell on that thing कि आप उसको इस चीज़ में ना अपने आप को इमेजिन करें, you know, visualize everything, क्योंकि उसी से होगा. आपकी जितनी ज़्यादा बढ़िया इमेजिनेशन होगी ना, the more you can focus on one thing. So when you are studying, just, you know, go inside that thing, analyze everything. अपने आप इंटरेस्ट बना जाएगा. नींद कभी आएगी ही नहीं. आपको नींद में भी ये लगेगा नहीं यार कर लेना चाहिए, थोड़ा सा तो और पढ़ लेते हैं. So that's what should be happening. Nice. We have a new question.
we should focus on our favorite chapter or on every chapter during the last day of exam. Dhruv Singh from Madhya Pradesh. We should focus on every chapter or the last chapter? Only our favorite chapter. Oh, on the last day of exam, you shouldn't be focusing on anything on the last day of exam. Really, like, you know, that's a lot of pressure, guys. So, on the last day of exam, you should chill, do everything. Last day before exam, जब आप focus कर रहे हैं, so I think just brush up. Points के ऊपर brush up, even your favorite chapters and your least favorite chapters. उनके ऊपर भी you brush up because it's important, नहीं तो दूसरे chapters बुरा मान जाएंगे. So, what you gotta do is कि आप main points पे सब पे focus करिए, shut your book, start enjoying. Nice. So another question is that we've heard of irregularities in the assessment systems. What if my marks are adversely affected? Hemu from Vishakhapatnam. Hi Hemu, your marks are adversely affected. I think, you know, go and talk with your teachers for that. क्योंकि आपको उसके लिए teachers से ही बात करनी पड़ेगी. It's the school that handles this stuff with your assessments and everything because of the irregularities and everything. अगर आपकी ये दिक्कत है कि आप irregular है अपनी assessments और assignment को लेकर, then that's your problem, Hemu. So you should be focusing on that. Shouldn't be complaining about that. But if it's the school's problem, then you gotta go and talk with your principal with the same confidence. Is that I need to do this stuff. But in a formal and in a respectful manner, they're definitely going to listen to you. And if they don't, then go to your parents. Your parents can handle everything then. Seriously, they can. They can. So, have you heard about Exam Warriors? I have heard about Exam Warriors, yes, and I've even taken a look at Exams Warrior, this book over here. Oh my god, it's so amazing. I looked at the main points of this book and the quotes they have given. Choti si quotes and guys, and those quotes, they can just fire you up. Like, yes, ab to sara padhi dete hai. So definitely it's something, you know, Government of India, I'm just super happy that, you know, this book has come across क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी है exams के time पे बच्चों को एक ऐसी book की which can just, you know, उनके अंदर motivation वो धीरे धीरे लाते रहे. तो आप जितना ज़्यादा इस book को पढ़ेंगे, ज़्यादा तो नहीं, आप धीरे धीरे exam के बीच में जैसे जैसे आप इस book को पढ़ेंगे, you know, we have it in both, in Hindi and in English both. So you can study it in both और फिर उसके बाद आप इसको धीरे धीरे जब exams के बीच में पढ़ेंगे ना, वो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा motivation आता रहेगा. Like, yes, now I gotta do this, now I gotta do this. It's just gonna maintain a balance with positivity and everything. So here is Exams Warrior. Definitely read it, gonna help you a lot. Worth it. It's going to help you in thinking of exams like a parv, like a yes, utsav, pariksha like a parv. Yes. Pariksha parv. Another question, how do we build self confidence? Ankita from Rajasthan. सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होता है ना, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकती सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि चलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए. हाय अंकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आप अपनी चीज़ों को लेकर खुद कॉन्फिडेंट होते हैं. यू नो, आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. आगे कॉन्फिडेंस, यही तो होता है. कोई और थोड़ी बोलेगा कि चल अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके. इट्स नेवर गोना हैपन अंकिता. व्हाट्स गोना हैपन इज जब आपके पास ये होगा ना, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके माइंड के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू शुडंट बी वर्किंग ऑन दिस, यू शुड बी वर्किंग ऑन द बेसिक थिंग्स जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. वो किससे होता है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. व्हाटएवर यू आर डूइंग, उस चीज़ पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा है. देयर इज द सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. That's a very nice take. So, people say they don't have a fixed time for my studies. Yes. Is that okay? Or do you have to have a routine or it can... I think that's okay. जब तक आपके पास ये वाली satisfaction है ना, like you're done with your target, you're done with the, you know, whatever you need to do right now, like you're supposed to read like Exams Warrior first of all, अगर हम इसके ऊपर focus करें. So if you're supposed to like read this whole book in a day, you have studied it, चाहे अब आप बीच में पढ़ने के बीच में आप 20 बारी उठे हो, 30 बारी उठे हो, it doesn't matter. जब तक आपका target खत्म है, it doesn't matter. पर हाँ, अगर आप अपना target नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो आपको forcefully अपने आप को time देना पड़ेगा कि इतना time होना चाहिए. But if you can complete your target, then time doesn't matter. You can do it by yourself. So another question from Aisha, Delhi. How do I deal with my family's disappointment if my results aren't good? You know, Aisha, sometimes criticisms, they help you a lot. Sometimes families' disappointments, they help you a lot. मैं आज तक जो भी हूँ, you know, I'm the wonder girl of India, you know, learning different accents, languages. Everything that I am today and everything I'm going to be in the future, criticism, they have helped me every single point. My dad is my biggest critic. My dad at every point of life, he has like, अगर अब ये interview देने के बाद मैं अपने पापा के पास जाऊँगी, पापा बोलेंगे ये चीज़ तूने गलत बोली, ये चीज़ तेरे को ऐसे बोलनी चाहिए थी. Every time it happens. So, you know, family आपको हमेशा ये बताती है आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं. उनका बताने का तरीका हालांकि अलग हो सकता है. कुछ थोड़ा नेगेटिवली बोल जाते हैं, कुछ पेरेंट्स थोड़ा पॉजिटिवली अपनी क्रिटिसिज्म को दिखाते हैं, अपने डिसअपॉइंटमेंट को दिखाते हैं. वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस चीज़ को ले
कैसे रहे हैं, आप उस चीज़ को नेगेटिवली ले रहे हैं या पॉजिटिवली ले रहे हैं. तो अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं, फैमिली की क्रिटिसिज्म को कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, आप उस वे में लेंगे सो इट्स ग्रेट. अगर आप इस वे में लेंगे ये मेरे ऊपर हमेशा बोलते ही रहते हैं, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो आप अपने ऊपर ही उस चीज़ को स्ट्रेस डालें, आप अपने ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन दैट थिंग नेगेटिवली. क्रिटिसिज्म आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं. ओनली इफ यू टेक इट पॉजिटिवली एंड एनालाइज ओवर दैट स्टफ कि आपने गलतियां कहाँ पर करी, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर ग्रेट, यू आर गोना डू ग्रेट. This is actually very relatable. Dads are the best critic actually. They are. And it helps you a lot if you just listen to them. Yes. So I get tensed whenever my friends inquire about my preparation. Should I stop talking to them? No, you shouldn't stop talking to them. अब अपने अंदर आपको इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी तैयारी अभी रहती है, I still haven't prepared, it's okay, you know I can prepare it after. हर चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको अगर चीज़ आती है कोई, अगर उस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, so even if you don't know a thing, उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Yes, I don't know about this, I can learn about this. That kind of confidence. So you shouldn't stop talking to your friends about this. They are your friends. You gotta talk with them. और अगर आपके if they are your real friends ना, so they're not gonna care आपकी preparation कितनी रहती है. You're gonna feel happy with them. You're gonna have like a sense of joy with them. You're gonna feel like satisfied with them. They're not gonna judge you or anything for that. So make sure you know that they are your friends. They're not gonna judge you for anything. If you have prepared, if you haven't prepared, rest assured, maybe they can even help you. You know, if you're not done with your preparation, they can even help you. So just take it positively. Don't stop talking with your friends. They're your best friends, guys. Don't do that. So people also face anxiety before their results, Yes. not just before their exams. Yeah, before results. So how to handle that? Everything is done. You've given your exams. You have given your exam. Anxiety तभी होती है, I think, जब ये होता है ना कि oh my god, I've got a lot of pressure, a lot of expectations. और फिर anxiety इस चीज़ की भी होती है, exams तो अच्छे नहीं गए, marks कहाँ से आएंगे? So anxiety उस चीज़ की भी होती है. So first of all, focus on your exams. आपके exams अच्छे जाएंगे, आधी anxiety वहाँ चली गई. People's expectations, you have to focus on yourself. लोगों की expectations, you should take that positively, yes. But उसके अलावा, you know, what people are gonna say, what people are not gonna say, it's not their life, guys. You have to keep reminding yourself, it's your life. You gotta do something with this. So आप सबसे पहले तो just focus on the present. Present is कि अभी result आने में time है, तो उसके बाद अगर कम marks आए तो मम्मी पापा की डांट तो खानी है, तो उससे पहले थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं. So focus on that thing, you know, just take it positively. एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए, एग्ज़ाम्स अच्छे से देंगे, एंग्जाइटी वहाँ पे आधी ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद it's your life, it's not other people's life, so stop looking for their validation and justification. If you're going to stop doing for that, if you're going to stop looking for those validation and everything, so anxiety, it's never going to come. Anxiety, again, very heavy word. So Jhanvi did address this question that has come up again. Yeah. Does muggling facts help? Is rote learning the solution? Stuti from Gujarat wants to know if you can tell her again. Rote learning, cramming stuff and everything, yeah. What's her name again? I'm sorry. Stuti. Hi Stuti, I'm Jhanvi. Stuti, I just want to say is that, you know, understanding up jitna zyada, if you're just going to rote learn stuff, now if you're going to cram more and more stuff, you're going to forget all of this stuff. Why? How about you just focus on the concept, you know, because that is the main point. The more you're going to focus on the concept, you're never going to care about cramming stuff. You're never going to care about hum exams mein kya likhenge, because a concept is cleared. Now you can even write it by yourself. When you're gonna like rote learn stuff and cram stuff up, so you have to care about every little thing, every little word. ये word यहाँ होना चाहिए, ये word यहाँ होना चाहिए. You're gonna care about every single thing. When your concept is cleared, आपको पता है, this is the answer, this is the concept, and I have it cleared. So there you go. So focus on understanding the concept more instead of cramming stuff. Dates and everything, yeah, you gotta cram them. उसके लिए you have to practice. You have to keep reminding yourself the dates, because those are important too. Probably you can come up with a method to practice the I do have a method for that. With the grade stuff, what you can do is that, you know, just build a story around that date. Like for example, you know, अगर हमारा कोई भी date आप उठा लीजिए, for example, I was born in 2003. तो 2003 से related कोई date है, जैसे 2000 में, और मेरे को अब date याद करने की 2000 में ये वाला battle हुआ, so I have to remind myself, मेरे 3 साल होने से पहले ये वाला battle हुआ, so build a story around that date. आप चीज़ को story के साथ लेंगे, वो story कैसे होनी चाहिए, imagination वाली पूरी creative story होनी चाहिए. तो आप उस date के around कोई story बनाएंगे ना, you can just keep reminding yourself like that a thing. film, a pictorial, yeah, pictorial film. it. You know, visualize it, colorful होनी चाहिए, वो imaginary होनी चाहिए. You know, something थोड़ा सा uniqueness भी होनी चाहिए. जैसे उस time में Mount Everest पे चढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ होने से तो रही, maybe हो जाएगी, because you people are great, you people are amazing. But still, अगर आपको लगता है, for example, कि मैं plane के ऊपर बैठ के गया, so that's something unimaginable. तो आप कुछ unique सोचेंगे ना, वो आपको ध्यान भी रहेगा. So always do that. So some people, I'm sure हम अच्छे बच्चे तो हैं जो starting से पढ़ते हैं, routine follow करते हैं. Yes. But some of us, the naughty ones, start preparation really late.
Like, so is it enough? One of the questions on the website अगर was आपको लगता है it's enough, just so it's 1 month enough. before the exam. Yeah, if you are confident enough कि मैं 1 महीने पहले प्रिपरेशन कर दूंगा, so it's enough. पर मुझे लगता है ना कि शुरू के 1 महीने में और लास्ट के 1 महीने में बहुत डिफरेंस होता है. शुरू के 1 महीने में आप प्रिपरेशन कर देंगे ना, तो शुरू के 1 महीने में प्रिपरेशन का ये रहेगा, अरे सारा काम तो हो गया, इट्स डन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है. काम को जल्दी जल्दी करके इधर उधर करिए ना, इतनी टेंशन क्यों लेनी, इतना लंबा क्यों खींचना किसी काम को. एक काम है, जब आपको एक काम करना ही करना है तो उसको इतना लेट क्यों करना. जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट स्टफ राइट नाउ, कंप्लीट दैट स्टफ एंड यू आर डन. आपके पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होगी, आई एम डन विद दैट थिंग. वो पॉजिटिविटी हमें चाहिए. लास्ट में आपके पास प्रेशर भी होगा, स्ट्रेस भी होगा. प्रेशर और स्ट्रेस भी तभी आते हैं जब आपको ये लगता है ना कि हाँ काम बहुत सारा रहता है. दैट्स व्हेन दैट स्टफ हैपेंस. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज आप जल्दी जल्दी काम को करिए कि हाँ ये काम हो गया, डन, सैटिस्फैक्टरी. दैट्स ऑल राइट. So another question from Deepika Gwalior. What study routine should I follow between exams? Oh, hi Deepika. I think between exams, between exams जो है ना सबसे कम पढ़ने वाला टाइम होता है. वो किस लिए? क्योंकि आप पूरा साल वही तो पढ़े हैं, अब एग्जाम के टाइम पे आप फिर उसे पढ़ेंगे. सो वो टाइम तो रिविजन का होता है ना, एंड रिविजन इट डजंट टेक मच टाइम. सो आई थिंक योर रूटीन शुड बी प्रीटी नॉर्मल, लाइक फोकसिंग लाइक 3 hours मे बी. अगर आपकी इफ़ यू हैव अ हॉलीडे सो 3 or 4 hours मोर देन इनफ, you're good to go. पर अगर आपको ये लगता है कि आप पूरे साल पढ़े ही नहीं, then you have to give like 10, 12 to 13 hours of yours. So please don't do that, just focus on your studies. Another common question is, if I have not scored good marks in pre-boards, then will I be able to get good marks in boards? In pre-boards, definitely, yeah, of course. Who said that अगर आपके pre-boards में अच्छे marks नहीं, आप boards में नहीं अच्छा score कर सकते? This happened with me. I was, I have to travel a lot, like travel to different places. So when I came back from like traveling and my programs and stuff, so I went back to my school, and over there pre-boards were going on. So I definitely did not score well because I did not study for them. So I studied थोड़ा बहुत शुरू में, जो मैंने बताया ना शुरू में काम को इधर उधर कर दो तो उससे रिलेटेड जितने मार्क्स आ गए. बट उसके बाद then I studied for my board. So of course, it just depends on you कि आपने प्री बोर्ड्स में किस तरीके का फोकस आपका प्री बोर्ड्स पे था और बोर्ड्स पे किस तरीके का फोकस था. बिकॉज प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स दे आर 2 different things, really different things. उस टाइम पे आपका फोकस अलग टाइप का होता है, उस टाइम पे आपका फोकस अलग टाइप का होता है. हमें प्री बोर्ड्स क्या लगता है, हमें लगता है कि क्रिकेट से खेलने से पहले वो एक हम वी डू अ ट्रायल, तो हमें वो चीज़ लगता है. सो वी डू नॉट टेक इट रियली सीरियसली. बट आई थिंक कि जब प्री बोर्ड्स देते हैं, सो इट मेक्स यू फेमिलियर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. सो स्टार्ट टेकिंग दो सीरियसली एज वेल. So usually we have our favorite subjects, right? So what do you suggest? Should we start with at the first year, the first part of the term, should we start with our favorite subjects or should we start with the ones that are difficult for us? I think आप difficult से easy के टाइप पे आएंगे ना तो बहुत easy हो जाएगा आपके लिए. मेरे पापा हमेशा कहते हैं easy से कभी भी difficult के लिए मत जाओ. हम trigonometry हो गया, differentiation, integration, ये हमने difficult बनाए हैं, ये already difficult थे नहीं. किसी ने कह दिया अरे बहुत difficult chapter है, हमने मान लिया difficult chapter है. आपके टीचर ने कह दिया ये बच्चों बहुत difficult chapter है, इसके ऊपर focus करना पड़ेगा. अब आपके अंदर ये हो गया कि अरे difficult chapter है, दूसरे लोगों ने जो बोल दिया वो मान लिया. This happens. नहीं, ऐसा नहीं है. वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने उसे बोला ये डिफ़िकल्ट है. वो इजी है क्योंकि हमें लगता है वो इजी है. तो हमेशा ऐसे मत कीजिए कि इजी से फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर. नो, सबसे पहले उस डिफ़िकल्ट को ही पकड़ लीजिए ना कि सबसे पहले इसी को देख लेते हैं क्या है ये. डिफ़िकल्ट से फिर इजी की साइड आते जाएंगे, चीज़ें अपने आप ईजी होती जाएंगी. एंड देयर इज नथिंग लाइक ईजी और डिफ़िकल्ट. इट्स यू हु मेक्स इट डिफ़िकल्ट एंड ईजी. So how do you tackle phobia for a subject? For example, maths. I think commonly people have this phobia around maths. So if you take maths as an example, how do you tackle the phobia around it? मैथ्स के बारे में अगर मैथ्स को एग्जाम्पल ना लेकर वैसे ही बात कर लें, मैथ्स इज़ रियली इंटरेस्टिंग मैन. आई फील सो मेनी नोटबुक्स. मैथ्स में तो मजा आता है. यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड कैन कीप डूइंग स्टफ. स्टडिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यू कैन लिसन टू स्टफ एंड देन स्टडी स्टफ. बट स्टिल अगर हम ये फोबिया टाइप की बात करें तो व्हाट इज़ फोबिया? फोबिया इज़ नथिंग. फोबिया इज़ जस्ट यू बीइंग स्केयर्ड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ थोड़े बहुत सेंटेंसेज हैं उससे डर रहे हैं आप. रियली इट्स नॉट स्पाइडर्स एंड बिग एनिमल्स और स्टफ. दीज आर जस्ट नॉर्मल बुक्स. दीज आर पेपर्स. यू आर स्केयर्ड ऑफ पेपर्स? No, you should remind yourself these are nothing. Studying is a lot of thing. Getting knowledge is a lot of thing. But you understanding that stuff is nothing. It's pretty easy for you. It's effortless for you. That's what you should keep reminding yourself. And it is effortless. So another common question is, what if I'm just too tense that I'm not able to sleep? In that case, is it okay to take sedative pills to sleep? No, don't do that. No, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना. आपको नींद क्यों नहीं आ रही उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है. You shouldn't be focusing on I should take pills to sleep. No, you should be focusing on why can't you sleep. So first of all, tell me why can't you sleep. Maybe because of the pressure of the exams. So why is the pressure of the exam going on? Why? Maybe आपने शायद से कुछ पढ़ा ना हो, तो आप खड़े होइए, पढ़िए, then go to sleep. Satisfactory वाली नींद आएगी.
You know, that's it. So focus on the main point. Focus on the foundation of the problem. Don't focus on the outcome of that. No, focus on the foundation. Everything's great. Usually you don't get sleep when you know something is undone. Yeah, something is undone. So that's why. So we are coming towards the end of our session, Jhanvi. Yes. I would like you to tell the students a moment that happened in your life where you were unable to use any of these mantras and you were really stuck and you needed some motivation from someone. ऐसा हुआ था कभी? Maybe शायद से ऐसा कभी ना हुआ हो, but yeah, I definitely have some stuff. When I was in 11th standard, मेरी 11th और 12th में ना stream बहुत change हुई, क्योंकि सारी चीज़ों का experience चाहिए था. Physics, chemistry भी पढ़नी है, sociology भी पढ़नी है, economics, political science भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है. How to pick one? Yeah, how to pick one? Stream सारी choose करी. तो करा क्या? You know, I changed, like in 11th and 12th, I changed like 3 different schools. क्योंकि उस time तक I became the wonder girl of India, so everyone was inviting you study with us, you study with us. तो नए school में जाते is like नई stream choose कर लेते हैं. So it actually, you know, then I was just regretting this stuff कि मुझे शुरू में एक decision लेना ना चाहिए था. So guys, this is what I'm gonna say from my personal experience. Be a decision maker. ऐसा मत कीजिएगा कि आपके friend ने बोला, ओए मैं commerce ले रहा हूँ, तू भी ले लेना. No, don't do that. Do your research first, then do that. If real friends, they're never gonna leave you. They're always gonna be connected with you. Don't do this कि अच्छा तू इस college में जा रहा है, मैं भी इसी में चलता हूँ. No. Focus. Your stuff. You should be doing that. हाँ, इन सब मंत्रास को मैं उस टाइम पे फॉलो इसलिए नहीं कर पाई थी because I was focusing on so many subjects at once. तो इसलिए वो प्री बोर्ड्स में मैंने बताया ना मार्क्स कम आए थे. So I was focusing on so much stuff at once. तो इस वजह से. So yeah, there has been moments, there definitely have been moments. Once another moment was there जब मेरे को एक motivational address देना था to 150 IAS officers and I was just sitting over there. मुझे पता भी नहीं था I have to give this and Chief Minister of Haryana was over there. I'm like यार सारा motivation कहाँ चला गया? There is nothing over here. You know, इस time पे I'm looking at my papa like यहाँ क्या बोलना है पापा? You know, so papa said, you know, they have invited you over here for a reason. So it's also important that you know your worth. You know why लोग आपसे इतनी expectations क्यों जोड़ रहे हैं? Because you have capabilities to do that. So you know your worth. तो उस time पे मुझे ये हुआ like yes, I gotta do something. You know, I'm worth it and I'm gonna speak over there. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लोग बोलेंगे बच्ची है, कोई बात नहीं. So I went over there, gave like a 20-minute speech, and I got a standing ovation from IAS officers and the Chief Minister of Haryana. So it's every time आपका end में जो है कॉन्फिडेंस काम आता है एक चीज़ के ऊपर और कॉन्फिडेंस कब आता है जब आपके अंदर एक्चुअल में नॉलेज होती है. कॉन्फिडेंस भी नॉलेज से आता है. सो बिल्ड योर नॉलेज एंड यू नो जस्ट एन्जॉय लाइफ गाइज बिकॉज वी आर डीलिंग विद सो मेनी नेगेटिव थिंग्स ना. एन्जॉय लाइफ, फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नो, प्ले विद योर फ्रेंड्स, डू एनीथिंग यू वांट टू, यू नो, जस्ट एंड प्लीज़ लीव सोशल मीडिया. इट्स अ रियली फेक लाइफ. वो बहुत एक फेक लाइफ होती है. इट्स फॉर फन, यू नो, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. यू नो, जस्ट बी पॉजिटिव. It's virtual reality. Yes. It's not reality. So on that note, we come to the end of this session, and I hope I had met you earlier because even I had this problem of you know, choosing a stream, not picking early or choosing the wrong stream just because your friends are going there. This happens. Oh yes, this so definitely I think this is a very good thing. One last question before we finish, you can answer is, we have competitive exams. Yes. And we have boards together. Usually people have to give entrance exams to schools and boards colleges together. So how to manage the focus or the preparation? I think you know, हमारा जो competition exams होते हैं ना guys, if you're gonna talk about it practically, so the competition exams, every syllabus of your competitive exams, it comes with, you know, जो भी आज तक आपने पढ़ा है, because nothing out of that. थोड़ा बहुत उससे बाहर है, so you can handle that. But हालांकि जो जितने भी competitive exams होते हैं उन सब में यही होता है जो आपने पढ़ा है. For example, if you're gonna give a competitive exam after 12th, तो वो 12th based का ही exam है, तो obviously वही सब आएगा जो आपने 12th तक पढ़ा है. So make sure your concepts are cleared, your competitive exams are cleared. So you know, do not give it like too much different kind of pressure and too much different kind of study. हल्की सी extra study would be necessary, like 1 hour or maybe 1.5 hours. That's it. उससे अलग if it's a 12th based exam, तो 12th से अलावा तो कुछ नहीं पूछेंगे ना. So focus on your 12th, competitive exams हो जाएंगे. If you're giving any other sort of exam, so make sure you set a target कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है. You have to manage stuff, you know. I can't do that for you. Nobody can do that for you. Your teachers can't do that for you. वो आपको time table नहीं बना के दे सकते. You have to be your own decision maker. You have to manage stuff by yourself कि on alternative days I have to study this subject on this in this day I gotta study this particular subject. Create a timetable. Be satisfied with it. That's it. So we have had a wonderful start to Pariksha Par 4.0, and Jhanvi Pawar gave a jump start to this whole month. Thank you. And I'm sure we are going to go ahead with much more of these sessions with many more motivational speakers coming in to talk to you all. Stay tuned. Thank you for watching.
Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you guys. All the best.